we will be going through 3 families of tests. One family which is referred to as chi-square, another which is referred to as proportion tests, the third which is referred to as Poisson rate tests. Pranay, if you're sharing the screen, we can't see anything. Huh? We can see Others, ours. can you see the screen? Yes. Sir, visible. Yes, sir. संजय एक बार चेक कर ले यार. Maybe internet issue at your end. Let me try unshare and share again. That will help. You guys able to see my screen now? Yes. Sanjay? Yes. Yes, sir. So the chi-square family has tests for all kinds of data. So you have y, which is count. तो भी काम करता है. It works when your y is category. It works when your x is count, x is category, etc. Proportion test, like the term itself means, proportion means percentage. So this is mostly applicable on binary data or summarized data. And finally, we have the Poisson rate tests. Here you have, this is applicable when your y is count. Chi-square is an extremely important test, especially for people from BPO and manufacturing, because jitne projects aap karoge, majority of the projects will be discrete data. So it is important that you understand these tests well. So when you have dy dx, 3 tests, one referred to as the chi-square, the other referred to as proportion, the third referred to as Poisson rate. Chi-square as a family very crucial test to perform. Chi-square test, chi-square ka essential meaning is difference between observed expected. Let's say we are trying to do a statistical analysis or a simple analysis of whether defect count is something to do with people. So let's say I have names of people. I have count of defects. Let's say I have a person A जिसने total में 100 errors करा, person B जिसने 150 errors करा है, I have a person C who's made about 250 errors. I have a person D who's also done 100 errors. If all these people are similar, the null hypothesis will say that
all these people are similar, which means that the number of defects made by the people should also be similar or same. You guys with me, everyone? Yes, Yes, sir. sir. So total कितने errors हुए? I have 250 plus 600. 600. So the summation is 600. Because I have 4 participants, so I'm saying ideally 600 by 4 or 150 should have been the number of mistakes made by everyone. Are you guys with me, everyone? Yes. Expected number of errors that has been made, that should have been made. This is nothing but the observed value. This O minus E is what is referred to as chi-square. Chi. Chi का मतलब O minus E. So observed minus expected, and whenever the difference between observed and expected is high, alternate hypothesis will be deemed true. Simple thought, everyone. Yes, sir. Yes, sir. This is a typical situation which is referred to as equal proportion. And we are expecting that all the 4 people must be equal. उनका experience similar है, उनका age, उनकी capability similar है. So my expected value is similar. Should it not be similar, then if you see this image here on the left hand side, this orange bar depicts the expectation, the blue depicts the observed. अभी अगर हम अपने डेटा पे बनाते chi-square, तो वो क्या करता, ऑरेंज बार को सेम कर देता सबके लिए, बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन था that everyone will end up making 150 errors. इस केस में when I'm trying to explore relationship between tenure of the employee versus attrition, I have used specific proportion, and because I have used specific proportion, the orange bar is of different sizes. Yes, everyone? Because मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल का काउंट कम है, मेल का काउंट ज्यादा है, इसलिए मैं इक्वल प्रोपोर्शन अज्यूम नहीं कर सकता था, मैंने स्पेसिफिक प्रोपोर्शन अज्यूम किया. सो द एक्सपेक्टेड ऑरेंज लाइन is depicting the expected value, and the blue line is depicting the observed value. And whenever the observed and expected are similar, roughly, if you see the male attrition, it is similar to the expectation. Female attrition slightly better, slightly more than expected, but फिर भी similar जैसा ही लग रहा है. Then you have a p-value which is greater than 0.05, or the null hypothesis is true. Thought clear, everyone? So Pranay, here we are saying nearly equal, nearly. So we are not saying a specific black and white, yes or a no. Correct. तो अगर मैं अभी वाला डेटा जो हमने बनाया था, अगर वो डेटा मैं लेके जाऊं, मिनट ऐप पे, this is people, this is defect count, this is the proportion that I thought, because सारे के सारे equal है. So if I do a chi-square here, I say my observed count is C2.
and my category name is C1. If I press OK, look at the orange bar. A is doing less than expected. B is doing exactly as expected. C is doing much more than expected. D is doing much less than expected. Hence, my p-value is showing alternate Okay, less hypothesis. than. Okay. अगर यही सोचो कि person A has done 80% of transactions, so I'm saying person A का proportion 0.8 है, ना ज़्यादा डिफेक्ट उसने करे. So let's say this is 0.1, 10%. This person has also done 10%. This person has done 70%. This person has done 10%. If I were to use, instead of the equal proportion, if I were to use the specific proportion here, look at this. अब orange bar अलग-अलग sizes का आ गया. Correct, everyone? Yes, yes. And then if you see the attrition, the number of defects made is actually showing less than expected. Because हम ये कह रहे हैं कि ये आदमी 70% ट्रांजैक्शन कर रहा है. So now in this scenario, we are weighing him against the specific transactions that this person has done. We have department level attrition information. Admin department से 4 लोग छोड़ के गए, HR department से 7 लोग छोड़ के गए, operations department से let's say 200 लोग छोड़ के गए, quality वाली टीम से 12 लोग छोड़ के गए, business excellence से let's say 15 लोग छोड़ के गए. अगर हम अभी hypothesis equal proportion run करते हैं, from the look of it, it is slightly senseless. अभी आपने बिना डिनोमिनेटर के ये सारा टेस्ट कर दिया. बिना डिनोमिनेटर के करने से क्या हुआ? You are saying apples, potatoes and bananas are same. Actually, admin department could have a head count equivalent to only 0.5% or 5% of the entire organization, while operations has 80% of the strength. Possible है ना? True. तो ऐसे केस में it is advisable to have the numerator as well, और उस numerator के basis पे आप proportion draw कर दो. Uma, you with me? Ajay? Yes, sir. Yes, sir. So numerator or denominator? Denominator, sorry. Yeah. वैसा करेंगे तो right तरीका निकलेगा, and then you will have a value something, you will have a chi-square graph similar to this, where your orange bars are not equal sizes. Everyone, are we together? Yes, yes, yes. Yes, sir. तो chi-square family जो हमारे पास available है, chi-square में हमारे पास 3 tests possible हैं. One test which is referred to as table. This is used when both y and x are counted. You have another test referred to as one variable when y is count versus x, which is category.
And finally, a third test, which is referred to as cross tabulation. This is done when both y and x are we together, everyone? Yes, sir. Well, could have an example like you are trying to find out if number of defects has anything to do with production count. Ideally, एक बेसिक हाइपोथेसिस इंडस्ट्री में रन करती है कि जब हम ज्यादा काम करते हैं तो काम की स्पीड की वजह से हमारी क्वालिटी कभी-कभी हो जाती है. So the question was, does quality get impacted by productivity? Defect has been captured as count. Production has also been captured as count. I will end up using the two-way table. Cool, everyone? Yes, Yes, sir. sir. Wahi, if you have a situation that your y is count versus x, which is category, in such a case, you will use the one variable test, something like y defect count versus gender, leader, anything of that sort. Then you are looking at doing the one variable test. Yes, no, black, white, we good? Yes, sir. Yes, sir. और one variable बहुत ज़्यादा यूज होता है. So you must have exceptional level of capabilities on doing the one variable. Cross tabulation in practical life is very rarely used. ये तब इस्तेमाल करना है जब आपके पास दोनों y और x कैटेगरी डेटा है. For some reason you've ended up using let's say something like quality, CSAT. You ended up using that as satisfied, dissatisfied, मतलब binary या ordinal कुछ भी, versus which city is the person from. अगर दोनों categorical data है, then you will use the cross tabulation test. Ideally, my recommendation would be that अगर ऐसा situation आए तो pivot लगा के अपने y को count में convert कर लीजिए. सर BLR के केस, Sorry, BLR इसमें यूज करते हैं क्या सर? BLR तो तब यूज करेंगे जब कंटिन्यूअस होगा. X तो कंटिन्यूअस चाहिए ना उसमें. यस सर, यस. यहाँ तो कैटेगरी में है आपका X. Questions, anyone? Sir, about this one variable, this test is also used for baselining, right? And checking the goal statement. वन वेरिएबल में टारगेट से कंपैरिजन का कोई जुगाड़ नहीं है. उमा, तो आप वन वेरिएबल को टारगेट वैलिडेट करने के लिए, टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर पाओगे. लेकिन सिर्फ हम CI देख सकते हैं. अगर मेरे पास टारगेट नहीं है, हम CI सिर्फ प्लॉट करके दे सकते हैं. रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्टेक होल्डर.
एक्चुअली CI पब्लिश ही नहीं करेगा ये। CI पब्लिश करने के लिए आपको पॉइजन रेट टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, Can all of you please pick up some data और मैन्युअली हाथ से बना लो कोई डेटा, काउंट कैटेगरी डेटा। कलेक्शंस का डेटा इस्तेमाल कर सकते हो। कलेक्शंस में यू हैव सम मैट्रिक्स व्हिच इज काउंट डेटा like promise to pay etc. You can use that data if you want. ध्यान रखना chi square is a very pure test. So इसको अगर जरा सा भी दिखेगा कि आपका डेटा कंटिन्यूअस है, डेसिमल में है, तो you will not be able to conduct the chi square test. So you will have to do a little bit of data cleaning before you use the chi square test. If you see here, I have in my column C24, promise to pay kept. These are promises that customers have kept for the payments that they owe to the business. So if this is my project Y, and this is one of the factors, promises made, I can go to stats tables. Pehle two-way table when both are numbers. So Y and then X, press OK. आपको ज़्यादा रकस करने की ज़रूरत नहीं है, P वैल्यू ने आपको बता दिया that that it impacts. वही if I want to see whether education has something to do with promises to pay kept, I go to stats, tables, one variable, promises kept versus education, press OK. ग्रेजुएट अगर रहता है आपका customer service executive or collections executive, his collections is more than expected. Undergrads का कम है, postgrads का कम है, but I am of the view that ये टेस्ट कंडक्ट करने के पहले एक बार अपने डेटा में प्रोपोर्शन जरूर चेक कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि we are comparing apples and oranges. So if I look at the data, graduates in my data account for 227 out of the total out of the total 305. So बाकी का डेटा ही कम है आपके पास और फिर भी आप इक्वल प्रोपोर्शन कर रहे हो, तो the answer that you've gotten may be slightly incorrect. Sanjay, you with me, guys? Yes. If you ask, तो यहाँ मैं वो proportion वाला टेस्ट करूंगा। तो मैं डेटा को पहले समराइज करूंगा और समराइज करके मैं सबके प्रोपोर्शन निकाल लूंगा। सो लेट्स से एजुकेशन वाइज मैंने कहा आई हैव education 1, I have grad, undergrad, postgrad. I have found out that this is about 80%, this is about 12%, this is about 8%. मैंने promises kept का sum निकाल लिया, कुछ भी कर, let's say this was 1300, this was
400. This was 200. ऐसा summarized data बनाना, and then I will do. This is the newer proportion. Proportion है तो बुरा क्यों मानता है? ETP-M. अब मैं इस डेटा पर specific proportion करूँगा. So I go back. Instead of using this, I'm using this. Instead of using education, I'll do C25 education. And instead of using equal proportion, I'll go to specific proportion and say, I have stored the proportions in C24. Approximation करने में ध्यान रखना, जब कभी भी proportion आप निकाल रहे हो, the sum always has to be 1. So अगर हमने कभी approximation इस्तेमाल किया और 0.82 को 0.08 लिख दिया और उसका सम अगर बराबर नहीं आएगा, वो 1 नहीं आएगा, तो वो टेस्ट आपको नहीं करने देगा. Simple thought, everyone. Yes, sir. I will go to. सर इसको जरा सा प्लीज एक बार. सर प्लीज इसको रिपीट एक बार करेंगे सर, समझ में नहीं आया ये. हम ये वन वेरिएबल टेस्ट कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है, इसको यूज करो when y is count data versus x which is category data. I have a very simple submission to make. ये by default uses equal proportion. अभी भी लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं. It uses default equal proportion. लेकिन ऐसा हमेशा रियल लाइफ में होता नहीं है that the data that you have collected will be in equal proportion. So if the variables if the levels of levels are not in equal proportion, the answer will be wrong. Hence, it is advised that calculate the proportion of these levels of factor. Use specific proportion I will go to the extent of saying मैं जब टेस्ट करने बैठता हूँ, मैं तो पहला हमेशा ऑप्शन करता हूँ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ही. If I can't justify specific proportion, only then will I choose the equal proportion. संजीव, बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर हो गया. एक दूसरा ग्राफ इसके साथ बन के आता है. Can all of you see this? Yes, sir. What is the heading of this?
chart of contribution to chi-square value by category. Chi value क्या बोला था हम लोगों ने? What is the chi का value? मतलब The difference between observed and expected. Absolutely. हम तो यही कह रहे थे chi का मतलब तो chi-square value जो है वो essentially is a value that demonstrates the difference between observed and expected. तो जिस भी लेवल में ज्यादा डिफरेंस आएगा, like if you see the earlier image also, इसमें ही दिखा रहा है कि observed और expected में डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि ये प्रोपोर्शन ही बहुत ज्यादा है, तो वो chi square को प्रायोरिटाइज कर देगा इसके बेसिस पे. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. I am trying to find out promise to pay kept versus marital status. I'm assuming it is similar proportion. They promise to pay made no ये नहीं चाहिए. Using C24 kept versus marital status. I am assuming equal proportion. यहाँ देखो, because I've used equal proportion, इसलिए वो कह रहा है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन chi स्क्वायर को सेम है क्योंकि प्रोपोर्शन ही सेम है, दोनों 50-50 है. You guys with me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sanjay, this could be a great project for you. Have you managed collection business ever? Yeah. 7 years I have done collections. तो भाई ये वाला प्रोजेक्ट तू बना ले. सेकंड प्रोजेक्ट मैंने जो सर्विस लेवल लिया है उसके साथ साथ कलेक्शन भी कर लेता हूँ. हाँ. और उसको दिखाना भी वैसे ही है. तो एक साइड पे मैं ये वाला फोटो लगाऊंगा, लेफ्ट साइड पे मैं जो पीस वैल्यू वाला सेगमेंट है वो दिखा दूंगा. हो गया. इन्फ्रेंस वही लिखूंगा as the p value less than 0.05, we conclude that factor, which is marital status here, impacts promise to pay made. क्या दिख रहा है? किसके promises ज्यादा हो, किसके promises are kept more? सिंगल्स. बात खत्म. This is how this slide should look like. अगर आपको इसको इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं करना है तो पहले आप अपने
एक्सेल पे जाके जेंडर वाइज कंट्रीब्यूशन निकाल लें. So if I look at female, marital status था, कौन सा करने लगे? Marital status wise अगर मैं काउंट निकाल लूं तो मेरी लाइफ इजी हो जाएगी. Yes, everyone? Yes, sir. So I can look at marital status. Married 101 data points, singles 203 data points, which means 101 upon 304. 33%. 103 upon 304. So this is the proportion. अगर मैं promises kept मुझे सिर्फ टोटल चाहिए. नहीं, यहीं पे ले लो ना आप, वैल्यूज में ले लो. हाँ, और उसको काउंट में कन्वर्ट कर दो. ये सम हो गया है, उसको काउंट में ले लो. सम ही चाहिए ना हमको. जो मेड था उसको सम कर देना है. यस नो? सम ही चाहिए था ना हमको. सम चाहिए था या काउंट चाहिए था? काउंट चाहिए था ना. लॉजिक समझाओ. नहीं, काउंट. So we are saying that married people और unmarried people ने के कितने promises keep किए गए, right? So here for this particular person we've had 61 count of promises kept. So इन दोनों का count is 2 और इन दोनों का sum is 163. क्या लेना है आपको? हाँ, सम लेना है फिर. करेक्ट. अब मुझे proportion निकालना था. 101 upon 304 और दूसरा था 203 upon 304. Stats, tables, one variable, ATP kept versus gender. Where is gender? Row level is gender. नाम चेंज कर देता हूँ, इसको जेंडर कर देता हूँ. Stats, tables, one variable, count of people versus gender in a specific proportion of C4. Press OK. Actual data दिख रहा है. पहले singles were looking like they were out. अब तो उल्टा ही है. अब तो मैरिड लोग अच्छा काम कर रहे हैं. करेक्ट. बोले एक साइज छोटा, रेड लाइन
रेड वाले डॉट को वहां ऊपर, बाकी तो सब कुछ सिर्फ ये चेंज करना होगा. PTP made is higher for married folks as against. आंसर कितना बदल गया? Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. संजय, तुम्हारे प्रोजेक्ट का तो एनालाइज फेज अगर हम चाहें तो अगले 15 मिनट में फिनिश कर लेंगे. एक्चुअली पिवट तो लगाना है, तो कुछ करना तो है नहीं. पिवट 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 पिवट. ये डेटा है आप लोगों के पास एवरीवन, और डू यू वांट मी टू सेंड इट टू यू? सर नहीं है सर. से दैट अगेन. सर सेंड कर दीजिएगा. सर है लास्ट डेटा जो आपने शेयर किया था. Someone please share your screen, start doing the tests. VD मैंने अपनी स्क्रीन बंद कर दी है. I want one of you to share your screen. yeah, I am Sure. right now. So here I am doing a chi-square for PTP kept versus shift. तो पहले मैंने ये पिवट लिया, पिवट का मैं रेशियो निकाल रहा हूं. उसके बगल में ही पेस्ट कर लो प्रोपोर्शन को, यहाँ से उठाए उसके पेस्ट कर लो. Correct. So here there is no significant impact of shift Shifts. because one, graphically it is visible, and also p value is showing as greater than 0.05. Correct? सही है ना? Absolutely. मतलब शिफ्ट का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है प्रोमिसेस केप्ट पे. मुझे स्कैरी होना तो चाहिए था. हाँ, नाइट शिफ्ट में कम होना चाहिए. Depending on what geography are you calling? या तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट फॉर विच यू आर कॉलिंग. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कॉलिंग फॉर एन Amex or a Cap 1,
then probably it would not have much impact. But if you are calling for maybe a resurgent, तो नाइट शिफ्ट वाले में बहुत ज्यादा डिप होगा. Anyone else wants to share? Sanjeev, Amrita. Oh, Amrita, to laptop not working. नहीं, मैंने और एक किया ये. I'll just share my screen once again. So this time I have done a chi-square for agents versus the sum of PTP made. Correct. Yeah. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 agents. Now? Coming up. Yeah. Others, आप लोगों ने कर लिया? Yes, sir. Oh, all are in proportion. बिल्कुल. ये लगता है कि एजेंट वाइज डेटा बना दिया है किसी ने. बिल्कुल एजेंट वाइज डेटा बना हुआ है. तो कह रहा है 0 chi-square contribution for anyone. या कुछ और कर दिया क्या आपने? एक बार दिखाओ मुझे. ग्राफ के नीचे वाला वो बटन क्लिक करके. ग्राफ के नीचे वाला. ओके. ग्राफ के नीचे वाला. ग्राफ एस्केप. हाँ, दिस वन ना. हाँ ना, नीचे वाला तो नहीं होना चाहिए था. सम ऑफ. ऊपर काउंट ऑफ एजेंट नहीं चाहिए. ऊपर सम ऑफ पीटीपी मेड चाहिए. Why? What is your project? PTP made. PTP kept. अच्छा कोई बात नहीं, आपने मेड ले लिया है वो. हाँ, नीचे काउंट ऑफ एजेंट नहीं चाहिए. X is एजेंट चाहिए. ओके. हाँ, Gaurav is doing better than expected. Nitin, Pankaj is doing less than expected. Anish is doing as expected, nearly as expected. थोड़ा सा difference है. Correct. Sir, I have one question if I can ask. Please, go ahead. Sir, what about if we check on a previous experience like CS as a customer service and C as a collection, and then that is OBS, I think it's a backend process. So we can also make decision on these types of people, whether customer service people or collection people or the backend people making more collections. Why not? All factors must be evaluated. Right, because while hiring people, we consider these things, whether people coming from backend or vice or I mean collections. We must. सब लोग जल्दी टेस्ट करो, अपना स्क्रीन शेयर करो. प्रणय, आपने सही कहा. अगर मैं कलेक्शंस का प्रोजेक्ट लेता हूं तो ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए मतलब
1 hour is more than sufficient. Absolutely. और थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके हम और बहुत सारे एक्सेस इसमें ऐड कर सकते हैं. Because we are exposed to this matrix. We know, we understand this matrix, no? Correct. Guys, a few of you can work with Sanjay and complete this project. ETP का project complete कर सकते हैं आप लोग. That way, Sure, sir. अच्छे project complete हो जाएंगे. And when you are on a lookout for a job, collections का project बहुत demand में होता है. Please also do the two-way table and the cross tabulation. जल्दी finish करो. You can move to the other tests. Sir, shall I just share this analysis which I just repeated? I mean, previous customers. Sure. Okay, sir. So here we have a previous experience. If you can share my screen. We can see. Okay, great. So we can make one variable test, and here we can choose collections. मर के नहीं जाते हो. Collections continuous data पे कैसे कर लोगे chi-square? Oh, my apologies. Collections is only about this. This project is on. This test is to be done only when your y and x are discrete data. Discrete data, right? I'm sorry. So give me a couple of seconds, sir. Sure. Sorry. Thank you. I'm assuming that you guys will take 5 more minutes. तो मैं 5 मिनट का break ले रहा हूँ. After 5 minutes, if you don't have any questions, I will move to one Poisson rate, the Poisson rate and the proportion test. Done, everyone? Please convert some data into category and do the test on those of cross tabulation, etc. on that. For example, if I were to convert collections as target met not met. So I now have captured data in category as well. If your y is categorical, x is categorical, you can do the cross tabulation test. I go to stats, I go to tables, I go to cross tabulation and chi-square. My project Y is collections. Factor is, let's say, maritals. Factor is, let's say, marital status for education. If you want the p-value, याद रखना है, you have to click chi-square and get the chi-square analysis from here. Press OK, press OK. Paste करने में कुछ गड़बड़ हो गया. Collections versus, let's say,
previous experience. You're getting a p-value. I would want, in most situations when you have to do a cross tabulation test, avoid करो, pivot लगा के number में convert कर लो, something like what they have done for you, और फिर ये test कर लो. Are you guys with me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये ज़्यादा अच्छा रहेगा instead of doing the cross tabulation. Cross tabulation should only be used for interview purposes. बाकी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए. हमेशा याद रखो, whenever you are doing analysis, your primary focus should be to try and get continuous data. नहीं मिलता है तो numeric data. Last option should be categorical data. Cool. We're good, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The next family that we are looking at is the proportion family. You have two tests, one referred to as one proportion, another referred to as two proportion. The test comes in two forms. First form में, if you have binary data, only two levels to your factor. And if you want to compare one of the levels or events, like it is called, then we can use the one sample, one proportion test. We just converted collections as met not met, and I want to see whether met not met का proportion कितना है. So it is saying that event that it has looked at is not met. What is the confidence interval? 59.1% to 70.16%. All of us can see this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक ऑप्शन तो ये, when you have binary data, but उसने by default not met का proportion बताया. याद रखना, जो alphabetically later आएगा उसी का निकालेगा वो proportion. Sanjay, are we together? VD? यस सर, फिर इसमें तो हम अपना डेटा जैसे हमने ही पहले ही अल्फाबेटिकली ऑर्डर चेंज करके रखा हुआ है, तो दैट मींस वी कैन काइंड ऑफ इंटरप्रेट द टेस्ट. तो या तो आपके पास ऐसा डेटा है, दूसरा फॉर्म जो है वन प्रोपोर्शन में, इफ यू हैव समराइज्ड डेटा, लेट्स से यू हैव
You are a quality auditor. Out of 1200 parameters, you found that 1945 have been correctly handled. कह रहा है नंबर ऑफ इवेंट इससे कम थोड़ी ना हो सकता है. Right. फिर वही काम. It gives you the proportion of the summarized information that you gave to them. अगर टारगेट डाल दोगे तो टारगेट से भी कंपेयर कर देगा. If I wanted, if I were to give it a target, let's say हमको क्वालिटी स्कोर का टारगेट है 95%, 95%. You press OK. ये कह रहा है ये 96.4 से लेके 97.9% तक है. So obviously alternate hypothesis आएगा. You can publish this to your client and say, yes, we are doing better than the target. Clear everyone? Yes. Yes. तो Yes, sir. इसमें दो ऑप्शन है. एक तो कि जब आपके पास बाइनरी डेटा होगा, और if you have summarized data. Event and trial. Very, very important test because ये baselining के लिए बहुत important है. Any questions on this? बट प्रणय इससे बेस लाइनिंग कैसे होगा? अब आप क्वालिटी का बेसलाइनिंग करने गए हो तो आप समराइज्ड फॉर्म में अपना डेटा कलेक्ट कर लो, पास या फेल का. सो लेट्स से you got the auditor's summary report and you now know out of 3000 conditions, existing quality team 340 errors कर रही है. So what is the current error proportion? 10% से लेके 12.5% तक. आप इसके अनुसार अपना टारगेट सेट कर सकते हो. ओके. गॉट इट. बहुत बारी ऐसा होता है कि पूरे एनालाइज फेज में काई स्क्वायर का इस्तेमाल बस 2 ही बार होगा. इस वाले टेस्ट का इस्तेमाल बस 2 ही बार होगा. एक बार जब इम्प्रूव कंट्रोल में इस्तेमाल करेंगे तो वैलिडेट गोल अचीवमेंट, या इस्तेमाल करेंगे डिफाइन फेज में जब ये प्रोजेक्ट का गोल स्टेटमेंट तैयार करना था. बाकी टाइम पे आप काई स्क्वायर रन कर रहे हो. वीडी जो तुम लोग एनपीएस का प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें वैलिडेट कैसे करोगे कि एनपीएस अपना टारगेट अचीव किया कि नहीं अचीव किया? बाइनरी में कन्वर्ट कर लो और वन प्रोपोर्शन टेस्ट रन कर लो. Yes. या समराइज कर लो डेटा को. या आउट ऑफ 400 एनपीएस पार्टिसिपेंट्स इतने ने तुम्हारा P माइनस D का वैल्यू इतना आया है, तो यू आर एबल टू गेट द प्रोपोर्शन. एक ही चैलेंज आएगा कि प्रोपोर्शन टेस्ट विल नॉट थ्रो आंसर्स इफ योर डेटा इज इन नेगेटिव. एनपीएस में कभी कभार क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, तो काम नहीं करेगा. Are we together everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा टेस्ट है हमारे पास 2 प्रोपोर्शन. 1 प्रोपोर्शन ये करता है तो 2 प्रोपोर्शन क्या करेगा? Used for pre-post analysis. मुझे समझाओ 2T टेस्ट क्या करता है? 2 ग्रुप के मीन को कंपेयर करता है, करेक्ट ना? Right. करेक्ट. हाँ. ये भी वही करेगा. Want to compare proportion of
एक ऑप्शन है आपके पास when you have binary data, अभी आपके पास ये कलेक्शंस का डेटा है बिफोर आफ्टर, अभी आपके पास ये कलेक्शंस का डेटा है और मेरे पास जेंडर का भी डेटा है, राइट ना? I have collections as binary. I also have marital status as binary. I have gender as binary. So if I want to see male female का met not met, अगर वो कंपैरिजन करना है तो आपको टू प्रोपोर्शन टेस्ट लगेगा. Yes, no, black, white. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा Yes, sir. प्रोपोर्शन वो कंपेयर कर रहा है? Not met. Not met. I am trying to find out whether not met percentage of males and females is equal or not. वो कह रहा है equal है. संजय, Yes. पक्का? पक्का पक्का. एक ऑप्शन है जब ये बाइनरी हो या दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास Summary data. AIG में 2019 में we issued 787 certificates out of 900 joiners. This year we've had 512 certificates issued for 600 people. Whether the proportion of certification issued is similar or not, बोल रहा similar है. बिल्कुल 1T टेस्ट की तरह अगर आप चाहें तो दोनों का सेपरेटली कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें. इफ दे आर juxtaposed at each other तो नल होगा, नहीं तो ऑल्टरनेट होगा. Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. बहुत रेयरली यूज होता है ये वाला टेस्ट बिकॉज इसका रिप्लेसमेंट आपके पास काई स्क्वायर के फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. रियल लाइफ बहुत रेयरली होगा कि आपको प्रोपोर्शन टेस्ट से इस्तेमाल करना पड़ेगा. Last test in this family is Poisson rate. हमारे पास one Poisson rate या one sample Poisson rate, two sample Poisson rate. This is used for count rate data. When you wish to compare count versus some target, जैसे हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है, ये जो प्रॉमिस टू पे कैप था, इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है. स्टैट्स, बेसिक स्टैट्स, वन सैंपल पॉइजन रेट, promise to pay kept, press OK. What is the current rate of promises that are being kept? 32 to 33. 30. Correct. टारगेट डाल दोगे तो टारगेट से कंपेयर कर देगा. टारगेट नहीं डालोगे तो बेसलाइनिंग में इस्तेमाल हो जाएगा.
बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है काउंट वाले प्रोजेक्ट में फॉर टारगेट सेटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. इम्प्रूव कंट्रोल फेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये टेस्ट. Clear everyone? Oma, you good? Yes, sir. Yes, sir. Sir, I have one question Please. regarding the previous one, met and not met event. Hmm. So I'm able to plot CI for met. I'm just talking about, I'm sorry, I'm going to the previous test, which is one No proportion. problem, no problem. It was drawing the confidence Not- interval of not met. Yes. What if I need to actually plot for met event? So we are actually doing a ध्यान से baseline मैंने for बोला कि वो बनाएगा किसका जो अल्फाबेटिकली लेटर आएगा. तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मेट, कुछ भी कर दो, मेट के आगे एक्स लगा दो, अच्छा नॉट मेट का नाम चेंज कर दो, कुछ भी ऐसा कर दो कि वो एम के बाद एन आता है. तुमको ये कर देना है कि नॉट मेट का नाम ऐसा कर दो कि वो एम के पहले आने लगे, और वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करे. जो लेटर होगा अल्फाबेटिकली उसी को वो इस्तेमाल करेगा. अच्छा, we are actually calculating अभी, we are doing a baselining for chatbot penetration. मैं नॉट मेट का तो निकाल पा रही थी, लेकिन मेट का मैं नहीं निकाल पा रही. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं गलती कहाँ पे कर रही हूँ. एक्स कर दो बस आगे. ठीक है सर. नॉट मेट को चेंज करके, नॉट को चेंज करके पेन कर दो या कुछ ऐसा कर दो कि वो NMOP M के आगे चले जाए. एन के आगे हाँ. चले. Understood, yes. Because we need to see CI for both, for met and not met, and customer is not actually sure about the benchmarking. So first of all, we need to tell them that this is the CI which is coming from your sample data, whatever for 6 months. Now you let us know what is your benchmarking or we need to follow. Correct. Okay. And it is actually very funny कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको दिखेगा एक मेट दूसरा एक्स मेट, बिकॉज ऑप्शन नहीं था, करना पड़ा सामने वाले को. And I was totally confused while doing that. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो आ क्यों नहीं रहा है. I didn't actually go into help section. So just because it is showing the difference, so that's why it is taking the next by default, I guess. दूसरा टेस्ट है आपके पास टू सैंपल पॉइजन रेट, लाइक द नेम इटसेल्फ सजेस्ट. ये 2T टेस्ट वाला लॉजिक फॉलो करता है. इफ यू वांट टू कंपेयर काउंट रेट जैसा हमारे पास था, आई कैन डू stats to poison. I'm doing promises kept versus gender, marital status, something like that. एक ही प्रॉब्लम है कि ये इक्वल प्रोपोर्शन मान के ही करेगा, तो आपको डेटा वैसे ही बनाना पड़ेगा. If you are hell bent on using it, then you must ensure data is in equal proportion. प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लो, 1 पॉइजन रेट 2 पॉइजन रेट को. Someone please share your screen and do this test. Are you guys done? My project Y, PTP kept. If this is my project Y, this is count data, correct, everyone? Okay. बेसलाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे? करेक्ट.
baseline करने के लिए we will use the one sample Poisson rate. If we want to compare it against this, which is also count, कौन सा टेस्ट करेंगे? Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this session. जाग जाओ, बहुत important काम है. Yes, sir. Experience is continuous data. इसलिए इस पे क्या टेस्ट करना है हमने नहीं पढ़ा है. Education is category data. Binary. कौन सा टेस्ट? Which test will be done here? Why count X continuous? X category? ये One variable. सर एजुकेशन में हमने 3 कैटेगरीज मिल रही है, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, सो इट इज नॉट बाइनरी. वन वेरिएबल कर सकते हो. यहाँ कौन सा करोगे मैरिटल स्टेटस में? वही सेम वन वेरिएबल. सो वन वेरिएबल कर सकते हैं बाइनरी में. बाइनरी है तो बाइनरी डाटा वो भी कर सकते हैं. 2 पॉइजन रेट. समझे? 2 पॉइजन रेट भी तो कर सकते हैं. Yes, sir. The data is in count, so we can create. इसके लिए क्या करें? प्रोसेस नॉलेज के लिए आपको इस डेटा को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर बाइनरी और ऑर्डिनल. फिर आप वंस कन्वर्टेड फिर आप ये कर सकते हैं. समझे? विथ मी ऑन दिस. यस 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 यस. शिफ्ट में कौन सा करेंगे? बीडी शिफ्ट में कौन सा करेंगे? जागो मोहन प्यारे. वन वेरिएबल. सर इसमें भी वन वेरिएबल कर. वन जेंडर में कौन सा करेंगे संजीव? आवाज नहीं आ रही तेरी संजीव. वेरिएबल सर. जेंडर में कौन सा टेस्ट? वन वेरिएबल. 2 पॉइजन रेट क्यों नहीं? दोनों कर सकते हैं. टेन्योर हमारे पास 3 लेवल में है. कौन सा टेस्ट करें? प्रीवियस एक्सपीरियंस आपके पास 3 लेवल है. One variable, sir. दिस इज कंटिन्यूस डेटा. हमने एवरेज पेमेंट साइज कंटिन्यूस डेटा है. कोई टेस्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है. और यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी एटसेट्रा एंड कंटिन्यू विद chi स्क्वायर. दिस इज आल्सो कंटिन्यूस डेटा. यूटिलाइजेशन में वही करना पड़ेगा, convert. This is also continuous data. This is also continuous data. यहाँ पे भी आप वन वेरिएबल कर सकते हैं.
मुझे नहीं पता था कि दोपहर में भी नींद आती है लोगों को. I thought this session will help. ये तो सब नींद में है. Never mind. अरे दोपहर में तो बहुत ज्यादा नींद आती है. So this concludes our discrete wala sara test. Discrete wala sara test is done. किसी टेस्ट को रिपीट करने की जरूरत है, we can do it again. Else we are pretty much done for discrete data. We can then do. ये क्या हो जाता है यार? Thank you for enabling us with some good voice, good sounds. But please mute कर लीजिए अगर कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं तो. Sorry, तो मैं पानी भर रही थी. Cross tabulation use both y and मुझे x. एक्चुअली ऐसा लगा अमृता इज प्लेइंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. Sound of water is beautiful. Used when both y and x are category. Like we discussed, try and convert to numbers and use one variable instead of this. Another test was two-way table used when both y and x are count data. Bas, simpler. Discrete, finished. अगर 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ले लो. दूसरी साइड 3 टेस्ट है हमारे पास. We can finish that quickly. You want to do it now, you want to do it after the break, your call. बताओ पब्लिक क्या करना है. We'll take a break, लेना sir. है. ठीक है. Yes, sir. नहीं. Let's take a break. This is 3:48. We meet at 4 o'clock, 4:05. Let's meet at 4:05 and take this further. Okay, sir. Should we start? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Now we are headed to the dy/cx category. dy/dx में we've done the 3 tests that were applicable: chi-square, proportion, and Poisson rate. We are now headed to the dy/cx category.
You guys can see my screen well, right? Yes, Sir. yes. Yes, sir. Yes, sir. Here we pretty much have one family of tests referred to as the logistic regression family. Tests बहुत simple है. T, Y, and CX. We have the three tests from the logistic regression family. One which is referred to as binary logistic regression. Another which is referred to as ordinal logistic regression. And the third which is referred to as nominal logistic regression. In all these three conditions, एक ही mandate है that the Y has to be either binary or ordinal or nominal, and the X has to be continuous data. So BLR में Y has to be binary, and X has to be ordinal logistic regression, Y ordinal, X continuous. यहाँ Y has to be nominal, X has to be continuous. ये खास करके बहुत important हो जाता है because when you're doing projects like customer satisfaction, NPS, so OLR becomes very handy. This one. If you, for some reason, you have converted your project Y into binary data, you can use the BLR. NLR is mostly used in behavioral sciences. Let's understand the three of them. Like we mentioned, Y is binary, and X is continuous data. Null will say X does not significantly impact while alternate will say X significantly. An example could be CSAT captured as happy sad, versus income size, etc. I would like to reiterate that logistic regression is a very important analysis tool. When you get into advanced logistic regression, it can be put to a lot of use in terms of building prediction models and things like that. Let's say I have collections which is binary. I go to stats regression. I go to BLR. Choose your Y, which is binary data collections. And in the model, I have added continuous data.
average payment size. Press OK. बहुत सारा information आएगा. Look for this logistic regression table. Look at the p-value for the model here. This test is capable of using several factors at one time. So you can either do one factor at a time, or you can use multiple factors at the same time. So you will look at the p-value there. If you've used single x, if you've used multiple x, you can get the p-values for individual x's here, while for the entire x's series, you can look at the p-value here. Any questions in so far, guys? So where we have model, there we can have multiple attributes as X, right? Correct. In that box? Yes. Okay. Look at this now. I have done it for average payment size, time on system, utilization, and experience. कह रहा है, as a model, they will impact. Individually, they don't impact. Individually, none of them impact, correct? Average payment size का p-value is 0.52, 0.44, 0.061, 0.572. तो हमारे हिसाब से तो फैक्टर्स इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, but the combination working together will impact your project value. Yeah. हमेशा यहां से शुरू करना. Look at the p-value for individual factors, and then you can also check whether the model is impacting or not. अगर सारे के सारे factors already not impacting है, no point going any further. यहाँ के p-values check करो, p-value के basis पे decide करो कि कौन सा factor आपके project y को impact कर रहा है. अगर impact कर रहा होता तो आप एक ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हो. अगर आप नया मिनट ऐप इस्तेमाल करोगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन पहले से ही बन के आएगा. ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट कोफिशिएंट y इज इक्वल टू कोफिशिएंट अब हर कोफिशिएंट को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चलो एंड ऐड इट एज अ पार्ट ऑफ योर मॉडल. This is to be done only when your only when your p-values are less than 0.05. ऐसे मत कर देना. See what I am doing. संजय. हाँ, yes. You are. सबको ऐड करके बस यही हो गया तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन. रिग्रेशन में इफ यू रिमेंबर यू आर गेटिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट यू आर क्रिएटिंग. ओके. This is the mathematical formula that you are getting. When we do advanced modeling, इसको इस्तेमाल करके हम प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं. याद रखना y hat or
the probability of positive event. Nothing but exponential of the transfer function. On 1 plus so you will be able to predict for a given level of factor what is the likelihood of success. So let's say you're doing a project on attrition. You've captured data as attrited, not attrited. You will be able to predict what is the likelihood of the person staying back in your company using the transfer function. Are you guys with me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. सुनने में अच्छा लगा कि कुछ समझ में भी आया? समझ में आ रहा है सर. Let me see if I can find a model that I've developed on attrition. All of you can see the screen. Yes. So, So हमने Yes, ये sir. शीट बना करके कस्टमर को दी. All you have to do is choose what is the level of what is the information you have. Let's say someone has a tenure of 2 years. ये तो भी existing employee, and we know his age, we know his marital status, we know how he comes to office, we know where he lives. The likelihood of him staying back is 71%. His risk score is 29. अब हम ये कह रहे हैं कि हम इसका रिटेंशन प्लान बनाएंगे. This is all done using chi-square and BLR modeling. Are you guys with me, everyone? Yes, sir. Yeah, this looks interesting. इसी के तो पैसे मिलेंगे भाई. यही करेगा तब तो पैसे मिलेंगे. और ये बहुत सिंपल काम है. इजी को डिजिटाइज कर दो. इसी को डिजिटाइज कर दो. You will do a huge service to your organization. Right from recruitment teams to anyone else. Operations team, everyone will be able to make meaningful decisions based on your historical data. Keep updating this model based on live data, and there will come a situation that this model will become extremely close to reality. Our model was able to
depict about 86% right information. I'm sorry, sir, I missed this part. Can you repeat it? What is this all about? We developed a model based on the DLR. Through this, you will be able to assess what is the likelihood of someone not attriting in your company or attriting in your company, and then you can pass on the relevant information to the relevant stakeholders. And this reason for rating, how did we get this rating actually here? DLR के टेस्ट से अच्छा, DLR से हमने देख लिया कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स का हमने ट्रांसफर फंक्शन बनाया और ट्रांसफर फंक्शन से हमने ये मॉडल डेवलप कर दिया. okay. This could be extremely crucial for any organization. कोई भी मेट्रिक का आप एक प्रोडिक्शन मॉडल बना सकते हो. Logistic regression is the maths behind all analytics in this world. इस पे ability होना, इस पे और correlation regression पे बहुत हेल्प करेगा. इसी के जैसा दूसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है आपके पास, ऑर्डिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक एनपीएस. Same story. Y is ordinal data while X is continuous. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. आप लोग 1 मिनट उसको प्रैक्टिस कर लो, मैं कॉल बैक करता हूँ. मैं 1 मिनट में आप कनेक्ट करता हूँ दोबारा. Yes, sir. Yes. ये बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट होता है. This can be huge help and it can make a huge difference to the way the organization perceives your importance. Modeling is what every black belt and master black belt should be able to do, and that is the expectation. कि कौन सी 5 चीजें मैं देखूं, अगर मैं कलेक्शंस मैनेज कर रहा हूं तो कौन सी 5 चीजें देखूं, और अगर मेरे मॉडल में कुछ भी चेंज होगा तो मेरे वाई में कितना परसेंटेज इंपैक्ट होगा. बस इतना ही खेल है ये. Are you guys with me, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Same for nominal logistic regression. सेम आप कर सकते हो एनएलआर के लिए भी. It can be huge help. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर. Same कहानी. Instead of y being ordinal, now your y is nominal data.
जिस तरह से BLR में ट्रांसफर फंक्शन बन सकता है, वैसे ही NLR और OLR में भी ट्रांसफर फंक्शन बन सकता है. That is why they are considered extremely useful. Clear, everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please shoot if you have some questions. In subtest को practice करिए. Come back to me with any questions if you have. Else आपका analyze sampler. Sir, this means that when the y is continuous and the x is discrete, I mean, sorry, Y is yes, discrete. y is, X. I mean, the parametric and the non-parametric test mostly used in manufacturing than in servicing. Not necessarily. अगर तुम्हारा मेट्रिक प्रोजेक्ट वाई कंटिन्यूस है तो कहीं भी यूज हो जाएगा. हैंडलिंग टाइम का प्रोजेक्ट साइड में, इस साइड में यूज करते हैं ना हैंडलिंग टाइम जैसा प्रोजेक्ट. Yes, yes. कलेक्शन जैसा प्रोजेक्ट, टाइम ऑन सिस्टम जैसा प्रोजेक्ट यहाँ भी करते हैं. Thank you, sir. नहीं, ये एप्लीकेबल तो हर जगह होगा because Right. we have many efficiency parameters that we work on. Correct. I mean, the most of the test used in services industry than in manufacturing. Maybe I'll think on those lines someday and come back to you. अभी तो ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं दिखता है. Right. अभी तो मैं इसको डिस्क्रीट साइट में डेटा विजुअलाइजेशन टूल बार चार्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा. Okay, sir. बस ठीक है एवरीवन. Yes, yes. I am done. If you guys have some questions, please come back to me one of these days. If all is well, you can start with your improve phase. मैं एडवाइस करूंगा संजय, ये PTP वाला जो प्रोजेक्ट है, इस ग्रुप के भी लोगों को इन्वॉल्व कर लो. एक साथ बैठो, 15-20 मिनट का तो काम है. हाँ, actually, मतलब it will not take much time. So all of us can get together and do Finish it in it. one day. Yes. 15-20 मिनट यार, 1 घंटे में हो जाएगा और एक अच्छा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा. क्योंकि डिफाइन मेजर तो ऑर्नामेंटल है. करने में तो कोई भी एक आदमी आप में से ओनरशिप ले ले, वो उसको डिलीवर कर दे, बात खत्म. प्रोजेक्ट तो हो जाएगा एक अच्छा PTP का. हम फिर से हमारे CEO से काम करवाते हैं. ठीक है प्रणय, विल वर्क इट आउट. खत्म करते हैं इसको. तो अभी सैटरडे संडे व्हेन वी डू द इम्प्रूव एंड कंटिन्यू कंट्रोल, so we'll be done with along with all of them, right, with the GB and BB all. Correct. ठीक है. Okay, thank you so much Pranay for giving us time today on a holiday, and thank you everyone for participating on a holiday. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye bye.